So friends, what we have observed? We observed that there are electrons, 6 electrons present in the outer side of the nucleus of a carbon atom. And you see, all the 6 electrons are distributed in different energy levels, which are called orbits, at the distant, at some distance from the nucleus. Now, that concept was given by Niels Bohr, but in the contradiction of that concept, there were few more concepts which came with the advancement of quantum mechanics. The first concept which came, that was the de Broglie's hypothesis. De Broglie's hypothesis. It says all the electrons or electron-like particles, which are obviously microscopic in nature, all particles will possess, all shall possess a dual nature. That means इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, उन सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के डुअल नेचर रहेंगे. Now, what is this dual nature? The dual nature means, here the dual nature signifies, number one, the wave nature, and number two, the particle nature. That means an electron or electron like microscopic particle जो होगा, उसका एक वेव नेचर भी होगा, एक पार्टिकल नेचर भी होगा. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए नहीं, सभी पार्टिकल के लिए इक्वली अप्लाई होता है. Each and every particle, they have wave nature associated with it. But question ये है कि सर अगर हमारे पास एक बॉल है, जैसे कि ये डस्टर हो गया, अगर ये डस्टर मूव कर रहा है, this is a macroscopic body which is moving, and according to, you are saying that according to de Broglie's hypothesis, that moving duster shall have a wave associated with it. But see, that particle is moving. Yes, that particle is moving, but we are unable to see the wave. Can you see the wave associated with that? No, sir, never. Why? What does it mean? Does that mean that it does not contain any wave associated with it? No, sir. It has a wave associated with it, but the problem is that wave is not a physically significant wave. That means the wavelength is such a small wavelength it has, the wave that it carries with itself, thus it becomes physically insignificant. So that is why what happens, we cannot see the wave, or we cannot feel that there is a wave also associated with that macroscopic body. यानी कि हर एक बॉडी के साथ तो एक वेव है, उसका एसोसिएटेड वेव तो रहेगा, एसोसिएटेड वेव वो तो होगा ही. पर क्या क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक पार्टिकल का जो एसोसिएटेड वेव है, क्या हम उसको देख सकते हैं या उसको फील कर सकते हैं? आंसर है नहीं. जो कि आप लोगों ने, you guys have studied, I think, the atomic structure, and you guys have proved that it may happen that all the objects, they possess some sort of wave nature in themselves, but the wave nature is only comes into existence when we talk about the electron or electron-like microscopic particles. Why not for macroscopic particles? Because we have already calculated that for microscopic particles, if you calculate the wave nature of it, the wavelength it will come in such a small range, it is of such a small range
that it will lose its physical significance. तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा. इसलिए जब मैक्रोस्कोपिक कोई बॉडी, मैक्रोस्कोपिक विच वी कैन सी विद आवर नेकेड आई, मैक्रोस्कोपिक कोई बॉडी मूव करता है तो सर इसके डुअल नेचर के बारे में बता के मतलब बताना और ना बताना सेम हो जाता है सर, क्योंकि अगर इसका डुअल नेचर हो भी तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो वेव नेचर है इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वेव है दैट वेव इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट. वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली. द वेवलेंथ विल बिकम वेरी वेरी शॉर्ट इन केस ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट्स. Okay, so we cannot physically have that wave existing. So that is why it is difficult to understand the wave nature of macroscopic bodies. But in case of microscopic particles like electron, the wavelength, it has a considerable value. That means the value of the wavelength in that for that microscopic bodies, they have such a value so that they can be physically significant. They can become physically significant. They can be judged. Okay, so what happens? All shall possess a dual nature. All the electrons and electron-like particles, they shall possess dual nature. The first nature is the wave nature. The second nature is the particle nature. And he proved, he gave a mathematical expression for that which says lambda is equal to h upon p, where we all know lambda is equal to the wavelength of de Broglie wave, obviously wavelength of the wave associated with that particle. Moment p is called the momentum of that particle, and h is called the Planck's constant. It is called the Planck's constant. So this expression gives us an idea how now by this expression we can prove that large objects, if they possess a wave nature, the wave will be physically insignificant. How? If that object is massive, that means the object has a large amount of mass. You see, it has a large mass. If the mass is large, then automatically the momentum becomes higher. If you see the wavelength, if it is the fraction of the momentum, if the momentum becomes higher, as the momentum is in the denominator, if the momentum becomes higher, then automatically the direct consequence of that de Broglie's hypothesis is the Heisenberg's uncertainty principle. We have studied what? We have studied that the Bohr mechanical model of the understanding of Bohr, which says that electrons are in a distant energy level, they are distributed, which are called the orbits, which were nullified by some quantum mechanical advances. The advances started with de Broglie's hypothesis, and we have discussed already the de Broglie's hypothesis and how it proved the dual nature of electrons. And this de Broglie's hypothesis has a direct consequence. इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. कैसे? जैसे कि हम लोग देखते हैं, de Broglie's हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था h by p, that means lambda equal to h upon p. Lambda is the wavelength, obviously the de Broglie wavelength, and p is the momentum of the particle, h is the Planck's constant. H is the Planck's constant. So now what it says, this de Broglie's hypothesis, the direct consequence of it is Heisenberg uncertainty principle. कैसे uncertainty principle को ये जज करता है? So we are going to the quantum mechanical rigor of it, but it will be slightly difficult for you to understand right now. But still, अगर हम मन से देखें और मन लगा कर सुने तो हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. मान लीजिए, I'll be bilingual obviously. Now you see the wave, the particle we have like this. The particle has a momentum p, and we know precisely, हम जानते हैं कि इसका momentum p है.
हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है किस मोमेंटम के साथ, p के साथ, यानी कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हमको पता है कि इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, p। अगर हमको पार्टिकल का मोमेंटम अच्छी तरीके से पता है, इफ वी नो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल प्रिसाइसली, then automatically the wave associated, the wavelength of the wave associated with that particle, that means इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा, उस एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ भी प्रिसाइज होगा। यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द momentum p is precisely defined, that means if the particle is moving in this direction and we know the mass, we know the velocity, we can calculate the linear momentum of it. Am I clear? So we know the momentum of the particle, of that microscopic particle moving precisely. If that is the case, अगर ये एक केस हुआ तो ध्यान से देखिए कि हमको ये पता ऑटोमेटिकली चल गया कि इसका मोमेंटम प्रिसाइज है, मतलब उस प्रिसाइज वैल्यू से हम उसका प्रिसाइज वेवलेंथ, यानी कि किसका वेवलेंथ, इस पार्टिकल के साथ जो इसका एसोसिएटेड वेव है, उस वेव का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। Am I clear? I think I am clear to everybody. That means if the value of this momentum is precise, that means the value of this wavelength is also precise. What does it mean? If I say the wavelength is precise, what does it mean? It says another story. What it says if you are saying that the wavelength is precise, that means you are certain about the wavelength, that means that wavelength is uniform from plus infinity to minus infinity. अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इसका जो इसके साथ, इस पार्टिकल के साथ जो इसका एसोसिएटेड वेव है, उसका मोमेंटम मुझको पता है और उस मोमेंटम से मैंने वेवलेंथ कैलकुलेट किया, मान लीजिए मेरा वेवलेंथ आया 3.5 एंगस्ट्रॉम, मान लीजिए x एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आया, x एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक मेरा वेवलेंथ है x, यहाँ से यहाँ भी है x, यहाँ से यहाँ भी है x। पर हो सकता है, इट कैन हैपन, कि आगे जाके ये वेवलेंथ चेंज हो जाए, मुझे पता नहीं है भाई, मैं नहीं बता सकता। सो इट मे हैपन दैट फर्दर इफ वी एक्सटेंड दैट वेव, द वेवलेंथ चेंजेस। सो कैन वी से द वेवलेंथ इज प्रिसाइज? नो सर। बट इफ वी आर सेइंग द वेवलेंथ इज प्रिसाइज, दैट मीन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी to plus infinity, that wavelength has same value or uniform value. That means माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाओ तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या रहेगा? x एंगस्ट्रॉम। तो ही हम कह सकते हैं दैट इज द वेवलेंथ इज प्रिसाइसली डिफाइंड। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, व्हाट फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला वी गॉट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p. p is the momentum, lambda is the wavelength of the wave associated with the microscopic particle, and h is Planck's constant. Now you see, if the momentum of the particle is well defined, यानी कि अगर मोमेंटम के बारे में हम प्रिसाइज है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद मोमेंटम p, हम प्रिसाइसली जानते हैं इसका मोमेंटम क्या है। अगर मैं प्रिसाइसली इसका मोमेंटम जानता हूँ तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी मेरा ये वेवलेंथ जो है ये क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया। वेवलेंथ मतलब किसका? अगर पार्टिकल का मुझको मोमेंटम पता है तो उस पार्टिकल के साथ द वेवलेंथ विच इज एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल, द वेव विच इज एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल, द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव बिकम्स एक्सट्रीमली सर्टेन टू अस, एक्सट्रीमली प्रिसाइज टू अस। एंड व्हाट डज इट मीन? अगर उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका वेवलेंथ अगर प्रिसाइज है, उसका वेवलेंथ अगर सर्टेन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसका वेवलेंथ क्या है? वो वेव मतलब उसका विस्तार माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, तभी मैं कह पाऊंगा। नहीं, अगर ये छोटा वेव होता, मान लीजिए मैं इस वेव के लिए कह रहा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है, आगे जाके x से बड़ा भी हो सकता है, x से छोटा भी हो सकता है। Are you getting my point? But if I say the wave of a wavelength x angstrom is, it is
smeared or distributed from माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वो वेव डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका वेवलेंथ है x, तो ही मैं कह पाऊंगा प्रिसाइसली उसका वेवलेंथ है x, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? आशा करते हैं कि इस बात को हम समझा पाए। नाउ यही एक नए प्रॉब्लम का जन्म देता है। कैसे? इट गिव्स बर्थ टू ए न्यू प्रॉब्लम। What sort of problem? You see how we can come to the Heisenberg uncertainty principle from the de Broglie's hypothesis. So by making the momentum precise of a microscopic particle, we precisely calculated the wavelength, and as the wavelength is precise, that means the wave is